हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रो। एंड आज जो मैं बात करने जा रही हूँ कुछ टेक्निकल नहीं बात करूंगी। इन जनरल लाइक स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टॉक के मूवमेंट को इफेक्ट करती है, राइट। जैसे इंटरनेशनल सिनेरियो है या जियो पोलिटिकल सिचुएशन है या इलेक्शन है या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, राइट। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर कोई भी बजट सेशन है या फिर कोई इलेक्शन आ रहे हैं, और इन सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट का। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ देयर विल बी ह्यूज वॉलेटिलिटी। इन सच अ सिनेरियो क्या किया जा सकता है वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस टू रीजंस कि व्हाई इज इट डज इट लुक सो कि मार्केट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। द फर्स्ट रीजन इज यू ऑल नो कि 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। गोवा में है 14 फरवरी को, मणिपुर में है 28 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, पंजाब में है 28 फरवरी को, और यूपी में शुरू हो गए और करीब जाके 7 मार्च में खत्म हो गए। तो पूरा महीना ऑलमोस्ट लाइक आज हम खड़े हैं कुछ 12 तारीख पे, और पूरा महीना ऑलमोस्ट इलेक्शंस रहने वाले हैं। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं, बेसिकली इवन इफ यू नो कि हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू बी द विनर, still there is a lot of uncertainty in the market, right? Market has nervousness क्योंकि इलेक्शंस ऐसी चीज होती है ना कि लास्ट मिनट तक जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन जीतेगा। तो वो जो नर्वसनेस होती है ना कहीं स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करती है। तो इस समय आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपकी कोई ओपन पोजीशंस हो, जैसे आपने कोई पोजीशनल स्टॉक ले रखे हो, ट्रेड कर रखे हो, कोई एफएनओ की सिचुएशन पोजीशंस हो, आपको उनको हेज करके रखना है, राइट। हेज करने का मतलब मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो मैं बताती हूँ। टीसीएस है, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास 1000 क्वांटिटी है टीसीएस की, तो रफली आपने कुछ 35 36 37 लाख रुपए उसमें लगा रखे हैं। सडनली मार्केट गिरता है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मार्केट नर्वस होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो ऊपर जाने से ऊपर कम ही जाता है। वो उसी दिन जाता है जब एक निर्मला सीतारमन कैंडल बने, राइट। नॉर्मली मार्केट गिरता है, मार्केट का रिएक्शन होता है कि एग्जिट, राइट। लोग बाग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको अपनी पोजीशन को हेज करना होता है। जैसे अभी टीसीएस का स्टॉक जो है ऊपर जाते जाते सडनली उसमें एक रिवर्सल आया है और नीचे गिर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसके कॉल ऑप्शंस को सेल कर दूंगी। दैट इज हाउ आई विल हेज माई पोजीशन। या मैं उसका एक फ्यूचर का लॉट सेल कर दूंगी, right? Best is going to be selling the call option. That's the best way to go about hedging your positions. तो इसलिए एक फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो है इलेक्शंस इन यूपी एंड मिजोरम एंड नो नॉट मिजोरम, मणिपुर, गोवा, पंजाब एंड यूपी। इन 4 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं, इट्स अ वेरी वेरी लाइक यूपी एंड पंजाब आर पल्स ऑफ इंडिया, राइट। पूरा पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो ऊपर नीचे हो जाता है इन 2 स्टेट्स के साथ, राइट। तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द रिजल्ट्स एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट पोजीशंस। जो सेकंड बहुत बड़ा रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि द टेंशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, the tension has been growing so much that today I will take you to the screen and you will be able to see that there is the news about American pulling out their troops, right? Because Russia is increasing their presence in that area, like they're increasing their uh, forces, and that means they are ready for war anytime. And always remember, I always give 2 examples जिसमें कि हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और इट कैन हैपन एनी टाइम। वन इज न्यूक्लियर वॉर, द अदर इज any war like this, like war situation anywhere. Any tension between 2 countries can lead to a multiple fall in stock market. So remain cautious. That's the only thing I want to tell. I'm not saying that it's imminent or it's about to come, aisa koi fall aa raha hai. I'm not saying that, but there is news, so you need to be careful about your positions. As of now, I am almost standing on 0 positions. I will re-enter when I'll find the correct situation.
As of now, I'll be concentrating more on selling options, call options, or somewhere, if some stock is bottoming out, then maybe the put option. But normally I'm standing out of the market, at least as it is. I'm traveling for the next 1 week, so no positions will be created. But in case at all, if I'm creating any position, it will be option writing positions. So two reasons you must remember. So be careful, right? अगर आप बहुत obsessed हो trading के लिए तो क्या कर सकते हैं? अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि भाई मुझे तो ट्रेड करना ही करना है. आई हैव टू रन माई हाउस, राइट? सम पीपल आर डाई हार्ड ट्रेडर्स, उनको रोज ट्रेडिंग करना है, कुछ पैसा बनाना है, सो दैट देयर फैमिलीज कैन रन. यू ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, right? You simply trade in nifty and bank nifty, right? And do like, I'm sure you have a strategy in hand. Use that. You can buy option, you can sell option, you can do whatever, right? Do your own technique, do your own strategy, but trade in something. When you finish your trading within that day, don't carry forward, because next day क्या होगा किसी को नहीं पता है. इसलिए I am not carrying forward any trade whatsoever, right? And that is the reason for making this video, to warn you, to tell you that be cautious, be careful. Market is going to be in a very jittery mode, right? ऊपर नीचे, or nervousness and fluctuations. Your stop losses will hit on both the sides. सभी कुछ होगा. सो इससे बेहतर है बाहर खड़े होकर देखते हैं, राइट? मार्केट को सीखते हैं. मैं मेरा एक ही बोलना है मार्केट के बारे में. आइदर यू लर्न और यू अर्न, राइट? अब आई एम नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग इन नेक्स्ट 1 मंथ, बट आई विल लर्न अबाउट मार्केट. सो इट्स अ टाइम फॉर लर्निंग. अगर हम अर्न नहीं कर रहे हैं तो हम लर्न कर रहे हैं. मार्केट में दो ही चीजें हो सकती है, आइदर यू लर्न और यू अर्न. So next 1 month, I probably may not earn huge amount of money, but I will learn about stock market. That's my personal resolve. You can all decide what you want to do, but please don't lose your money. That's my humble request, right? Please, please, please don't lose money. You know that the markets are going to be volatile. So why do you want to go for big investments, or going for big amount of, taking big risk about with your capital? So don't do that. So the reason for, making this video was to warn you, to alert you, so that you remain cautious about the market. And if you like such kind of content, please like, share, and subscribe. I'll be really looking forward to hear from you. Please write in the comment box in case you want to hear from such topics, such topics, or any other topic that you have in mind. Take care. Bye bye. See you.